Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from SURAJ Secondary School, Mehndad. Dear students, in last video I discussed with you topic issue of debenture as collateral security. Today I will discuss with you topic entry related to issue of debenture when redemption condition are given. Dear students, debenture can issue three types: par, premium, discount. Debenture can issued at three types: par, premium and discount. But redemption can be only two types: par and premium. Debenture cannot redeem at discount. In this topic 6 कंडीशन आर एप्लीकेबल. स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर आपकी 6 कंडीशन बनेगी जब आपको इशू की एंट्री करनी और रिडेम्पशन की कंडीशन दे रखी है. पहले तो आपको ये बताओ रिडेम्पशन कैन बी टू टाइप्स: par and premium. At par, when debenture redeemed at par, then your first entry will become debenture account debit to debenture holder account. Debenture account debit to debenture holder account. Second, debenture holder account debit to bank account. Or when debenture redeemed at premium. When debenture redeemed at premium, then your first entry will become debenture account debit, premium on redemption account debit, premium on redemption account debit to debenture holder account. Dear students, problem is that if debenture is redeemed at par, there is no problem for the issue of debenture entry related to. यदि डिबेंचर पार पर इशू हुए, रिडेम्पशन पार पर हुए, तो इशू के एंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यदि डिबेंचर प्रीमियम पर इस रिडेम्पशन हुए हैं, तो इस प्रीमियम को हम शुरुआत में राइट ऑफ करेंगे. अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो तो उसको शुरुआत में राइट ऑफ करेंगे. तो आपके 6 केस बनते हैं. पहला केस 1, व्हेन डिबेंचर issued at par and redemption also at par. यदि डिबेंचर इशू पार पर और रिडेम्पशन भी पार पर, पहले आपको इशू की एंट्री करनी है. तो फर्स्ट आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application and allotment account. Bank account debit to debenture application and allotment account. Second entry will pass debenture issue की होती है बेटे, debenture application and allotment account debit to debenture account.
डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिफरेंट ये इशू की एंट्री है पार पर। अगर रिडेम्पशन भी पार पर हुआ है तो यहाँ प्रीमियम नहीं आया है रिडेम्पशन का, तो इशू की एंट्री एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। दिक्कत प्रॉब्लम्स वहां आएगी जहां आपका रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगा। फिलहाल रिडेम्पशन पार पर है, यहाँ प्रीमियम नहीं आया तो इशू की एंट्री एज इट इज रहेंगी, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। केस सेकंड, second case, when debenture issued at premium, when debenture issued at premium and redemption at par. केस नंबर 2। तो पहले मैं आपको इशू की एंट्री बता रहा हूं। इशू की एंट्री आपकी बनेगी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application and allotment account second entry will be debenture applications and allotment account debit, debenture application and allotment account debit to debenture account to security premium रिजर्व अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी रिडेम्पशन पर प्रीमियम नहीं है, पार पर है, प्रीमियम नहीं आया, तो इशू की एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, एज इट इज रहेगी। थर्ड केस आपका, केस नंबर थर्ड, when debenture issued at discount and redemption at par। जब डिबेंचर इशू तो हुए डिस्काउंट पर और रिडेम्पशन हो रहे पार पर, आपकी पहले आपको इशू की एंट्री करनी है। तो इशू की पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन and allotment account debit discount is the expense and expense will be debit, discount on issue of debenture account debit to debenture account। ये इशू की एंट्री। अब देखिए क्या रिडेम्पशन पर प्रीमियम, रिडेम्पशन पर प्रीमियम नहीं है, यहाँ कोई प्रीमियम नहीं आया, तो इधर इशू की एंट्री पर कोई फर्क नहीं आएगा, इशू की एंट्री पर कोई फर्क नहीं आएगा, तो रिडेम्पशन किस पर है, पार पर प्रीमियम आता नहीं, तो इधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। केस नंबर 4, when debenture issued at par and redemption at premium। जब डिबेंचर इशू हुआ पार पर, रिडेम्पशन किस पर है, प्रीमियम पर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पास एंट्री फॉर इशू। आपको इशू की एंट्री सबसे पहले पास करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखिए क्या रिडेम्पशन पर प्रीमियम है,
तो जो ये प्रीमियम बनता है रिडेम्पशन का, इसके लिए आप क्या करोगे, रिडेम्पशन के प्रीमियम की अमाउंट निकालोगे और उसको वहां डेबिट है तो इसलिए खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। डेबिट में इसके लिए स्पेशल अकाउंट ओपन होगा, दैट्स नेम इट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट। अगर रिडेम्पशन पर प्रीमियम है तो इशू की एंट्री पास करें, सेकंड एंट्री में प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा और उसके लिए स्पेशल अकाउंट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। केस नंबर 5, when debenture issued at premium and redemption at premium। केस नंबर 5, जब डिबेंचर इशू है प्रीमियम पर, रिडेम्पशन है प्रीमियम पर, फर्स्ट एंट्री विल पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू की एंट्री करनी पहले, सेकंड एंट्री विल पास डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to debenture account, to debenture account, to security premium reserve account। रिजर्व अकाउंट ये इशू के जब देखिए क्या रिडेम्पशन की प्रीमियम है, यस रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिडेम्पशन एंड इट आवर अमाउंट विल बी क्रेडिट। प्रीमियम रिडेम्पशन की अमाउंट कैलकुलेट करो, उसको आप क्रेडिट करो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, इन डेबिट एक स्पेशल अकाउंट इज ओपन एट इन नेम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। केस नंबर 6, when debenture issued at discount and redeemable at premium, when debenture issued at discount and redeemable redemption at premium, first of all dear students you will pass entry for issue, first entry will pass bank account debit to debenture application and allotment account, debenture application and allotment account, and second entry will pass debenture application and allotment account debit, debenture application and allotment account debit to discount is an expense, expense will be debit, discount on issue of डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। क्या रिडेम्पशन पर प्रीमियम है, यस, देन अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिडेम्पशन विल बी कैलकुलेट, क्रेडिट विद द प्रीमियम रिडेम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट and debit with the loss on issue of debenture। discount can also set loss on issue of debenture, discount को आप loss बोल सकते हैं, तो you will use this word for discount, interest or discount you will use loss and you will add this amount। Dear student, these are the 6 cases for the issue of debenture when redemption condition are given। सामान्य शब्दों में बात है बेटे कि यदि पार पर रिडेम्पशन है तो केवल आप इशू की एंट्री करोगे, और यदि प्रीमियम पर रिडेम्पशन है तो इशू की एंट्री करेंगे, उसके क्रेडिट में सेकंड एंट्री में प्रीमियम रिडेम्पशन, डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पर यूज करेंगे प्रीमियम रिडेम्पशन के अमाउंट से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू अंडरस्टैंड इट then like and subscribe our YouTube channel। Thank you, have a nice day।